Tata Indica, a car which is very emotional for a lot of Indians out here because it was the first indigenous car made by Tata Motors, and 20 years later we still have the car. One of the most amazing condition Indicas I have seen, and this is the owner of the car, Saurabh. Hi. Saurabh, jaldi start karo. Quick introduction about you and your car. So hi, as Pat said, I am Saurabh and I am a lawyer by profession and I work in an insurance broking firm. So this is my car. This is the 2003 Tata Indica petrol. So Saurabh, tell me the story of this car. How did you buy this car, and what was the overall buying experience of this car? So 2003 में हमने हमारी फैमिली ने ये गाड़ी खरीदी थी. This was our first brand new car. Okay. 2003 से लेकर 2013 तक हमने ये गाड़ी यूज़ की एंड एक्चुअली मुझे इच्छा नहीं थी कि ये गाड़ी सेल होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वी वांटेड टू अपग्रेड टू समथिंग बेटर, सो ये गाड़ी हमने सेल कर दी थी एंड आई वाज नॉट इन टाउन, आई वाज स्टडीइंग समवेयर एल्स. So your family sold the car without telling you? I was aware, but I was still not mentally ready. So Okay. it took a lot of time for me to digest that I'm not going to see this car. So I came to know that the car is situated in Akola. Utna Okay, pata tha. okay. So I was constantly trying to track down the owner, trying to contact him. So Okay. finally 2023 में, that is on Valentine's Day to be precise, वो मेरा owner के साथ contact हो गया ये Okay, गाड़ी का. okay. And that's when I told him the entire story. Okay, So 2003 to 2013 मैंने उनको story बताई. 2013 to 2023 story उन्होंने बताई. बताई. And that's when the deal happened and I got this car home. So Saurabh, when you bought this car in 2003, आपने और कौन सी गाड़ी कंसीडर की? Santro, Wagoner, 800 Alto, what all? So quite weirdly हमने शुरुआत की थी सेकेंड हैंड डीलरशिप से. हम सेकेंड हैंड गाड़ियाँ देख रहे थे, बट वॉट एवर कार्स विच वे आर सीइंग वो बहुत ही बेकार कंडीशन में थे. सो हम प्राइमरीली मारुति ऑल्टो, मारुति वर्सा एंड मारुति जेन, दीज वर द कार्स विच वे आर कंसिडरिंग. उसमें से मारुति वर्सा काफ़ी अंकलिश कार थी. Then Maruti Zen भी थी, but Maruti Zen the sales were already dwindling because of the Indica V2. And Maruti Alto एक बहुत अच्छा choice था, but the car was too small and cramped. And since the automotive magazines was the only source of information back then to know about cars, so हर एक journalist उस दिन में V2 के बारे में बोल रहा था. The Indica V2 has been a huge improvement, ये है वो है, and that's when we decided that we will get this car. So what was the price of the Indica back then? 20 years back क्या price थी इसकी? So I remember तब ये गाड़ी की कॉस्ट थी रुपीज 3.8 लाख रुपीज, लेकिन हमने 3.8 lakh, that's it. या ऑन रोड. Okay. एंड लेट मी ऐड मोर. सो हमने नेगोशिएट करके 3.6 लाख रुपीज ऑन रोड में खरीदी थी. तभी 20,000 का डिस्काउंट भी करवाया. करेक्ट. सो व्हेन वी वेंट टू द डीलरशिप टू बुक द कार, वी सॉ अ न्यू कलर लॉन्च्ड, कोरल ग्रीन करके. Okay, this one. सो हमने ये कलर सिलेक्ट किया था, बट वी टुक 20 days फॉर डिलीवरी फॉर दिस कार, क्योंकि कलर वही भी मैन्युफैक्चर हो रहा था. अच्छा. तो 20 days लगे थे ये पेंट करने में गाड़ी. And yours was the first car in this color. First car in Mumbai in this color. And tell me one thing, at that time the Fiat Palio was also there, which was around a little more expensive than the Indica. Correct. तो इसके competition में exactly कौन सी गाड़ी थी? Because the Alto was a segment lower in terms of space and size. Correct. Palio was comparable. लेकिन Palio ज़्यादा expensive थी. So what was the scenario? तो पालियो एंड इंडिका वेर एक्चुअली इन अ सिमिलर सेगमेंट इफ यू इग्नोर द प्राइस. लेकिन पालियो का इशू ये था, हमारे पास पहली थी प्रीमियर पद्मिनी व्हिच वाज अ फिएट. वी डिडंट वांट अ फिएट अगेन. सो एंड उसी टाइम में काफी सारे लोग अपग्रेड कर रहे थे उनके फिएट से या मारुति से आल्सो. सो नोबडी वांटेड टू पुट देयर हैंड्स ऑन अ फिएट एंड दैट वाज द प्राइमरी रीजन वी डिडंट गो फॉर अ फिएट. सो टाटा वाज आई वुड से much better than Fiat, so that's why we went for this brand. And तभी Fiat Palio brand new कुछ 5.5-6 lakh रुपए की आती थी. So I think Tata wanted to make the Indica more value for money, which is why they priced it lower, right? Correct. The Palio 1.6. Yeah. So Tata basically wanted to keep their first hatchback a lot more value for money. इसलिए काफी value for money इसकी price रखी वो लोग ने, while not compromising on space and comfort. So Saurabh, tell me one thing, now when you bought the car back in 2023, obviously गाड़ी perfect condition में नहीं होगी, but right now it looks fabulous. तो क्या काम करवाया, where did you get it restored, and what was the approximate cost? गाड़ी के parts मिलते हैं या नहीं, मतलब अगर किसी ने ऐसी गाड़ी ली आज, so what do they have to keep in mind? So 2023 मैंने ये जब गाड़ी ली, so the owner had told me कि they had used it around 15,000 kilometers in 10 years. So 43,000 kilometers हमने यूज़ करी थी. So around 57,000 kilometers odometer था 2023 में. तो उसके बाद वो ये गाड़ी मैंने पूना में ट्रांसपोर्ट कराई टू साई कार क्लिनिक, आसित कुलकर्णी, who restored this car. तो टॉकिंग अबाउट इट, सबसे पहली चीज़ हमने करी थी वो इसका थ्रॉटल बॉडी चेंज किया था अलॉन्ग विद द थ्रॉटल बॉडी वायरिंग. उसके बाद फ्यूल पंप चेंज करवाया. आफ्टर दैट द कार वाज रनिंग fine. The car was hitting some decent speeds, but still the car was not perfect.
So I decided to go all out with this car. Whatever parts were available, I just wanted to buy them new and put it on the car to make it a reliable experience. So we started from these two parts, as I told you. उसके बाद हमने क्लच प्लेट चेंज किया गाड़ी का. सस्पेंशन इज एंटायरली न्यू इंक्लूडिंग द लोअर आर्म्स एवरीथिंग. उसके बाद गाड़ी का एसी भी डेड था, तो एसी कंप्रेसर मैंने चेंज करवाया. तो गैस टॉपअप वगैरह वो भी सब आया. ऑल द होस पाइप्स हैव बीन चेंज, एवरीथिंग इज ब्रांड न्यू. उसके बाद इंजन के इंजेक्टर सर्विस करवाए, जो टैपेट्स है वो भी सेट करवाए. दैट इज़ द मेजर मैकेनिकल पार्ट ऑफ द रेस्टोरेशन. पूरा एग्जॉस्ट मैंने नया करवाया, वो बॉम्बे में करवाया. इट्स अ फ्री फ्लो एग्जॉस्ट नाउ, बट इट्स साइलेंट. सो ये काम मैंने करवाया. नाउ टॉकिंग अबाउट कॉस्मेटिक्स, सो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग स्पेयर पार्ट्स मार्केट. दैट इज बेसिकली न्यू शॉप्स एंड इवन कुर्ला वेयर वी गेट ऑल द पार्ट्स फ्रॉम स्क्रैप कार्स. सो ये हेडलाइट्स जो है वो मैंने नासिक से सोर्स करवाए. नासिक में मुझे मिले थे हेडलाइट्स. फिर इंटीरियर में स्टीयरिंग व्हील जो मेरा था वो खराब हुआ था. सो ये कॉस्मेटिक रेस्टोरेशन की स्टोरी है. एंड ऑल द अदर स्मॉल ट्रिम्स एंड बिट्स एंड पीसेस लकीली दे वर इंटैक्ट ऑन द कार. सो इंटीरियर को ज्यादा हाथ नहीं लगा है. सो आफ्टर दैट आई जस्ट गॉट द कार एंटायरली पॉलिश्ड अगेन एंड इट वाज रेडी टू गो. सो बेसिकली आपने बहुत ज्यादा एफर्ट, टाइम, मनी सब कुछ डाला है गाड़ी को रिस्टोर करने में. करेक्ट. आई मीन इट्स नॉट एन इजी जॉब टू डू, राइट? कि ऐसी गाड़ी ले ली और चलाओ बस उसको. करेक्ट. कैन यू डू वन थिंग? लेट्स स्टार्ट द इंजन ऑफ द कार. गाड़ी की एक बार आवाज सुनते हैं, इंजन की साउंड सुनते हैं कैसी है. श्योर. So this is the 1.4 liter petrol motor, and that's how it sounds. So tell me more about the engine. I mean, petrol Indica is very rare. कितना horsepower, torque क्या है इसमें? So I will tell you a small interesting fact about this car. So Tata was a champion of cost cutting and brilliant ideas. So Tata ने क्या करवाया पेट्रोल इंजन लॉन्च करने के लिए, वो डीजल जो ब्लॉक था वही ले लिया और पेट्रोल में कन्वर्ट करवाया. So if you look at all the petrol and diesel variants of any car, the cubic capacity is different. But with this car, it was 1405 cc for both petrol and diesel, which is very rare. Same engine capacity. So this is the diesel motor which is converted to a petrol. But since it's a diesel, it is very torquey to drive. And it produces around 75 horsepower with 110 Newton meters of torque. अच्छा, वन थिंग आई नोटिस, यहाँ पे इतना सारा इंसुलेशन दिया है टाटा मोटर्स ने. इतना तो ब्रांड न्यू गाड़ी में भी नहीं आता आजकल. सो हाउ यूजफुल इज इट? हाँ, सो ये भी मैंने चेंज करवाया था. पुराना था वो बहुत फट चुका था. ये भी ज़्यादा नया नहीं दिख रहा है. बट येस, दिस इज चेंज्ड. सो आई बिलीव कि सिंस दिस वाज अ डीजल मोटर कन्वर्टेड टू अ पेट्रोल एंड एज वी हर्ड द नॉइज राइट नाउ, इट इज़ अ वेरी लाउड कार. सो इसलिए मैंने शायद इंसुलेशन दिया है. सो इवन व्हेन यू ड्राइव द कार राइट नाउ, इट इज नॉइजी बिकॉज ऑफ द एज ऑफ द कार. But so mostly it's because of the engine only they have given this insulation, is what I believe. ठीक है, चलो अभी ड्राइव पे जाते हैं. Sure. So Saurabh, we are finally driving around in your Indica, and you know what? This is the first time I'm trying an Indica. मैंने Bolt चलाई है, Zest चलाई है, Indica Vista चलाई है, Manza चलाई है. But original Indica first time मैं चला रहा हूँ. I've traveled in these cars, of course, as cabs. Yeah. But पहले काली पीली भी होती थी Indica बीच में. I think there was a phase. Yeah, rarely, but there used to be there. And then the Sandros took over. But feels nice. 20 years down the line, it feels so good. The petrol, of course, feels like a diesel over here because of the noise. But performance is surprisingly good. So you know, so it has a larger footprint, to be honest. And so since this car has an independent suspension setup, it feels very planted also. Right now, yes, we are doing 60, but if you go at triple digit speeds also, then even at that time this car is very stable. And what happens is, जो छोटी गाड़ियाँ रहती है वो undulations पे या portals पे unsettled रहती है. Yes. But because of this suspension setup, ये गाड़ी बहुत ही comfortable है, even if the roads go bad or even if there are undulations. So that was the biggest plus point when buying this car. मैं daily drive मेरी Honda Amaze करता हूँ, but even sometimes like once or twice in a week मैं ऑफिस पे भी ये गाड़ी लेकर जाता हूँ. And it's a good experience. And unlike the 800, this has a brake booster and better brakes. So Western Express Highway पे आपको पता है काफी tailgate करके traffic चलता है. So I don't have the fear of not stopping in time while driving this car. So what is your family's thought about this car? Do they like using it? Do they like the novelty attached to it?
तो पहले मैं जब गाड़ी ढूंढ रहा था पूरे हाँ। फैमिली को ही पता था, ओके सो दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग ये गाड़ी मिल जाएगी। Okay, गाड़ी okay. मिलने के बाद कंडीशन कैसी रहेगी वो भी एक्सपेक्टेड किसी को नहीं था अच्छा। कैसी रहेगी, क्योंकि लाइक माय ब्रदर वाज हैविंग एक्सपेक्टेशंस कि उस पे गंदे सीट कवर्स होंगे, चाइनीज म्यूजिक सिस्टम होगा, ये सब ऑल्टर किया रहेगा, वो ग्रास वाला बैट होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, गाड़ी Okay. ओरिजिनल थी। उसके बाद रेस्टोरेशन भी एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट था, ओके वो भी सक्सेसफुली हो गया Okay. बिकॉज ऑफ आसित एंड अदर काइंड फ्रेंड्स। या So overall, they enjoyed the experience. Even it's a thing of past memories for Yeah, them. yeah. And even while so going out on Sundays or anywhere else during our free time. Yes. So we take this car out sometimes because, as we discussed, it is a very comfortable car. So what future plans do you have with this car? Plan to modify it or just keep it original like this? I want to keep it as original as possible. Okay, Right okay. now, keeping it running in good condition and keeping it in reliable condition is my target. Okay, अगर कुछ मुझे parts इसके मिलते हैं जो brand new parts है mechanical, not the suspension parts, Yeah, कोई छोटा मोटा electronic parts हो या sensors हो, तो वो मैं कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ. Okay. So in the future, if I ever get any trouble, I at least have a spare part to immediately make my car running easily again. So that is my future plan with it. Okay. And cosmetically मैं थोड़े से हल्के फुल्के मॉड्स की सोच रहा हूँ. फॉर एग्जांपल पिन स्ट्राइपिंग ऑन द साइड, Okay, और okay. मे बी इन द फ्यूचर मे बी अ ड्यूअल टोन पेंट जॉब, बट दैट इज अगेन मैं हवे में बात कर रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट, बट ये मैं कोशिश करूंगा करने की. What could be better on the car according to you? मतलब क्या some feature that is missing or something that could be improved upon As a product, not this particular but as a product. As a product, like no one used the word refinement while developing this car. I Okay. don't know. Like right now we are doing 70-75. Camera कितना capture कर रहा है पता नहीं. But there is a lot of road noise. There is a lot of engine noise. Exactly. Now this car was repainted, so a lot of panels were removed from this car and again installed. But उससे बाद rattles इतने बढ़ गए. Even on a clean stretch of tarmac, there are a lot of rattles you can hear. So even at triple digit speeds, though it is a very comfortable car, sometimes the rattles make you give you that lot of irritating feel to it. So that is the only part which I could wish Tata worked upon that time. Okay. I'm sure जो नए इंडिकास थे बाद में 2012-13 के इंडिकास, उसमें वो issues address किए रहेंगे उन्होंने. So but I don't know about that, but such issues should have been addressed a lot earlier than at a later stage. It could have saved the Indica's image also. सौरभ, मजा आ गया इंडिका चला के. फर्स्ट टाइम आई ड्रोव एन इंडिका इन माय लाइफ. आई हैव ड्रिवन द न्यू वर्जन्स बट नॉट द V2 एंड काफी मजा आ गया. नाउ वन टिप ऑफ एडवाइस फॉर आवर व्यूअर्स, ऐसी गाड़ी ये टाइप की विंटेज की गाड़ी किसी को लेनी है, सो व्हाट वुड यू एडवाइस? पहले इफ़ यू आर गेटिंग इनटू अ ओल्ड कार एक्सपीरियंस, प्लीज़ उसका एक लिस्ट बनाओ कि अगर इफ़ यू आर शॉर्ट लिस्टेड अ कार, प्लीज़ उसका एक लिस्ट बनाओ कि इसमें क्या पार्ट्स चाहिए क्या नहीं. मार्केट में रिसर्च करो ये पार्ट्स अवेलेबल है कि नहीं. अगर यूज़ पार्ट्स भी अवेलेबल है तो उनकी लाइफ कितनी है, कंडीशन की कैसी है, वो भी आपको चेक करना पड़ेगा. देन ओनली गेट इनटू दीज काइंड ऑफ ओनरशिप्स. और हाँ, पेपर्स ज़रूर चेक करना. चलो, थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू एंजॉयड इट. We'll see you guys very soon in the next one. Goodbye. Yeah.